हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स से प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 14.1 पेज नंबर 270 फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड इट। The concentration of sulfur dioxide SO2 in air was collected for 30 localities in a certain city is presented below. Concentration of sulfur dioxide in ppm यानी parts per million. Concentration of sulfur dioxide in ppm and frequency from 0.00 to 0.04. अगर concentration of sulfur dioxide होगा तो frequency क्या होगी वैसी 4, यानी उसी तरह 0.04 to 0.08 it's 9, 0.08 to 0.1 to 9, 0.12 to 0.16 to 0.16 to 0.204, and at last 0.20 to 0.24 is also 2. In this case, we have to find the mean concentration of sulfur dioxide. Mean concentration of sulfur dioxide in the air in terms of ppm, that is parts per million. चलिए हम मालूम करें. Whenever you find mean, there are three methods for finding mean. First method is direct method, second method is deviation method, and the third method is step deviation method. Step deviation method से हमें बहुत ही accurate answer and बहुत ही close answer हमें मिलेगा, इसीलिए हम always step deviation method को first preference दें. चलिए, by step deviation method, how to make tabular form for finding the mean. First two columns तो as it is होंगे, concentration of sulfur dioxide in terms of ppm and frequency. So first two columns will not be different, it will be same. Then आपको आएगा mid values, third column होगा yes mid values xi, next column deviation, that is ui, and at last fi ui. ये तीन कॉलम्स आपको मिलेंगे in case of mean by step deviation method. Now let us write the first two columns as it is. What is first two columns? 0.00 to 0.04, frequency is 4, 0.04 to 0.08, 9, 0.08 to 0.12, also 9, 0.12 to 0.16, 2, 0.16 to 0.204, at last 0.20 to 0.24, it's a 2. Now summation FIUI we will get by adding second column, that is frequency, that is nothing but 30 localities. 30 localities you can add. 2 plus 4 6, 6 plus 2 8, 8 plus 4 12, 9 plus 9 18, 18 plus 12 is yes it's 30. Now let us go for finding mid values. First find the mid value of 0.00 to 0.04. So what is the mid value of 0.00 to 0.04 is 0.00 plus 0.04 by 2 average. 0.04 by 2 हो जाएगा 0.02. 0.02. No need of adding every number and dividing by 2. बहुत ही simple way में just find the frequency, just find the length of the class interval. H is equal to, so what is the answer of H? 0.04 minus 0.00, 0.04 minus 0.00 हो जाएगा 0.04. just add 0.04 in every mid values consecutively, जिससे कि हमें सारे mid values of class intervals आ जाएंगे. 0.02 to 0.04, 0.06, then 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, ये हो जाएंगे mid values. Then go for deviation. Highest frequency select कर ले. There are 2 9s, but out of 2 9s you can go for any one of the 9. So third 9 को चले जाए 0. If you go down, plus 1 plus 2 plus 3, and if you go up it's minus 1 minus 2. Now 4 into minus 2 minus 8, 9 into minus 1 minus 9, 9 zeros are 0, 2 ones are 2, 4 twos are 8, 2 threes are 6. Now add and get summation FIUI. Summation FIUI. Plus 8 minus 8 gets cancel. 6 plus 2, yes, 8. 8 minus 9, minus 1.
ये हो जाएगा समेशन एफ आई यू आई। सो हमें समेशन एफ आई क्या मिल चुका है, इट्स नथिंग बट 30 एंड समेशन एफ आई यू आई वी गॉट इट एज -1 स्ट्रेट टू 0। लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगा ए अज्यूम्ड वैल्यू अमंग द मिड वैल्यूज। सो ए वैल्यू क्या हो जाएगा 0.110 यानी 0.10 ये हो जाएगा ए वैल्यू। सो वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज एंड वी हैव कलेक्टेड ऑल द वैल्यूज so that we can find the mean by step deviation method. So what is the formula for mean by step deviation method? Its mean x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi into h. By using this formula we can find the mean for 30 localities of concentration of sulfur dioxide in terms of ppm. So therefore mean x bar is equal to a plus summation fi ui divided by summation fi into h. ये हो जाएगा मीन का फॉर्मूला x bar is equal to a. What is the answer of a? 0.10. summation fi ui हो जाएगा 30 divided by summation fi हो जाएगा summation fi ui is nothing but -1. summation fi ui is nothing but -1 and summation fi is nothing but 30 into h. h हो जाएगा length of the class interval 0.04. so therefore 0.10 plus into minus minus 0.04 divided by 30. so this is nothing but 0.10 minus, if you cancel 0 from denominator, point will be shifted left side, point left side shift हो जाएगा 0.004 by 3. so divide करने पर मिल जाएगा 0.10 minus 3 1s are 0.00, 3 1s are 3, 1 यानी 10 हो जाएगा, वो 3 3s are 9, so हो जाएगा 0.0013. ये हो जाएगा आंसर अप्रोक्सीमेटली. नाउ 0.10 सब्ट्रैक्ट 0.10 माइनस 0.0013 क्या होगा? By calculating we will get the required mean. 0.10 minus 0.0013. So by subtracting we will get the required answer. Take the borrow, ये हो जाएगा 10, 9, 9, 0. Now 10 minus 3, 7, 9 minus 1, 8, 9, 0.0. So therefore mean x bar is equal to 0.0987. अगर हम 87 को राउंड अप कर दें, so 87 is nearer to what? 80 or 90? Yes, it is nearer to 90. Therefore approximately we can write mean x bar is equal to 0.09. 87 is nearer to 90, that is 0.90. 90 is nothing but 9 only. So therefore the actual answer, more approximated answer of mean x bar is 0.099, which is the concentration of sulfur dioxide for 30 localities in terms of ppm, parts per million. So therefore the answer of this problem for mean is 0.099 in terms of ppm. इससे हमने प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है, हमने मीन कैलकुलेट कर लिया है फॉर 30 लोकेलिटीज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. इसी बात पर आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर.